Good morning, everybody. My salam, my namaste, my sat sri akal, wanakam, and namaskaram, and greetings to all of you. Alhamdulillah, this is the first time I'm going live, and I can see from people's comments, which are going at a very rapid pace, that they are at least seeing me. So, thank you very much for joining. There are lots of people here. I can see that. And what I want to do today is basically talk very briefly, or more, shall we say, daydream in public. So I want to tell you a little bit about what is Khanversations, what I want to achieve with Khanversations, and how this came about. And so you'll have to bear a little bit. So you'll get to know a little bit more about me. Some of you have asked various questions. And so let me tell you, I'm a professor, a full professor at the University of Delaware. The University of Delaware is one of the top schools in the country. Don't go by the rankings. We don't have a medical school and we don't have a law school. So we are unfortunately ranked lower than what we are. We are an R1 university in the US, which is Research One University. The University of Delaware gets nearly $200 million or around that per year to do research. So it is one of the top tier R1 universities, and I am a full professor. For those of you who are from overseas and do not understand, so I've been here for 17, 18 years. So after 5 years, you're evaluated, and if you are productive, if you are good, you are promoted to associate professor with tenure, which means that unless you do something really criminal, you cannot be fired. And it gives you the freedom to write freely, speak freely, and also grants you academic freedom. It is critical for intellectual development. एकेडमिक फ्रीडम के बगैर यानी ख्यालात की आज़ादी के बगैर साइंस में सोच में तरक्की नहीं हो सकती. Without academic freedom, you cannot really push the boundaries of knowledge. And so tenure is critical in that sense. It gives people the freedom to do what they want. And if after 5, 6 years you're evaluated again, and if they think that your productivity is good, plus if you have some name in the field, if you are having some kind of a global impact, then you're promoted to full professor. This is where I am in my academic career at the moment. I have always had a YouTube channel. In 2010 or 11, I started it and I never really used it. Sometimes people would send me links to videos of talks that I have given, or sometimes I would give sermons in the mosque. A lot of people who are critical of me will say, oh, Muqtedar said this, Muqtedar said that. Often it was not true what they were saying. So we started posting my religious talks on YouTube, just so that when people would lie about it, we would have proof that they are liars. So we started doing that, and then COVID happened. And believe it or not, I spent really a year and a half in this room studying, reading, and doing things. But I have always felt guilty for leaving India. I felt that India was, you know, doing very well. This was the time to be in India. But I felt that people like me were more needed in India. There are many people like me in the US. So I always felt guilty about it. So when COVID started, I started using this quite a bit. And what I did with this is I started helping the people in my state in Delaware. So I interviewed lots of people. I interviewed the governor of the state, the deputy governor, senators. I interviewed people from every religious tradition. I interviewed an imam, a rabbi, a pastor, a person who is Hindu. And they all came and talked about how their religious values can be used to fight the pandemic. So I brought in the religious perspective, I brought psychological perspectives, etc. So I did all of this during the COVID. And then a little later in 2000, I kind of had a mild heart attack. And that's when I started thinking,
a lot about India and back home, and I felt that I owe India something. And I didn't know what that was. I was not a rich man. If I was a very rich man, I would just go and build something in India, build a university or build a school, and then that feeling of guilt would hopefully go away. So then I realized that all I have is some knowledge in some field, and I thought, why not share that? So I gave a special focus to India, and so conversation, which was initially just focused on Delaware, and Delaware is a very small state, and so the channel was not growing in size either. So I started talking about Indian issues, etc. So with conversation, my goal primarily is to do 4 or 5 things. Number one, I do a lot of book reviews. So very recently, I spoke to my colleague, Professor Wayne Batches, about his book about the impact of American courts on the role of political parties in the US. You can see the video, it's on Conversations. So I do several books. I even did Arthasastra. I did some of the classics of Islamic tradition in the past. I did one on Babarnama, which was very widely listened to in India. Actually, Ashtak did a podcast on it. Ashtak carried some parts of the conversation on it and so on. So it got a lot of attention even in India. So one thing that I want to do is books, and I will do more and more books. In fact, I just bought 3 books on India, which came out or are coming out this week. I bought them last night, and so I'll be doing that. Uh, I also want to talk about theoretical issues. So I've started this channel on international relations, this series. I'm going to, inshallah, finish the second one this before the end of January, and it will be up. On realism is the first one. It's the most complicated and the oldest tradition, and I'm trying my best to see how I can bring it down to 20 minutes. I will be doing them in 2 languages. Basically, I will do it in English and then follow up with Hindi and Urdu. Uh, so that is the second thing I want to do, is to do concepts. I want to do political ideologies. What is Marxism? What is feminism? What is liberalism? What is libertarianism? What is social democracy? What is religious nationalism? So I want to do a series on ideologies. So basically conceptual things. There is an axe to grind there. For example, I can also use that in my classes. I did a conversation last year on the rise of religious nationalism. And that video I was able to use yesterday, actually, in one of my classes. It's a 20-minute video. So I'm hoping that other professors will also use it in their classrooms. And it will become like a small Khan Academy of geopolitics and international relations. The third thing that I do is because of Zoom now, I accept more invitations abroad. And so, like, I gave several lectures last year in Indonesian universities. I gave a lecture to some think tanks in Hyderabad. I gave a lecture to Lovely University in Punjab. I spoke at a conference in Saudi Arabia. And so I'm able to record those videos, and I also share them on Conversations. So there are academic presentations for those who are interested in it. I don't get many views on that, but at least a couple of thousand people do spend some time watching those presentations. And then for India, these are the things that I want to do. I want to focus on geopolitics because that is one of my fields. I also want to start a Hindu-Muslim dialogue somewhere. I'm trying to figure out how. I have invited a couple of leaders from the RSS to come on Conversations. They have not responded yet. I want to talk to people who disagree with me rather than those who are in agreement with what I do. I also want to engage with the public. That is why I'm doing live. So you can ask me questions. Amit Bhatti, nice to see you. You're such a good supporter. So people I'll have a dialogue with the public. In the US, there are a couple of things that I want to do. I want to protect the religious freedom and academic freedom. Those are the two important things. And I want to focus on American foreign policy. So for my country, which is America now, my contribution is on American foreign policy. So you can see I do a lot of videos on American foreign policy, how it is made, the process, etc. And with my country of my origin, which is India, I want to also do, besides foreign policy, I want to do some social
cultural things. So those are the things that I'm doing right now. I'm also going to try and see if I can improve my skills, so that I want to make small documentaries of 8 to 9 minutes on various topics. I travel a lot. Like I went to Istanbul for a vacation in November, and I tried to do a video from outside Hagia Sophia and the Blue Mosque. I did it. You guys, some of you watched it, but I couldn't control the audio. So I need to become technically much better. And so hopefully I will be able to do outdoor shoots also. The second thing, besides making documentaries, is I want to be able to travel and interview people, so that they are sitting side by side, which means that right now I'm working in the laptop environment. And I'm going to take a picture of this and I will share it with you as to how it looks, my setup here. And so you can see how it looks. So I use a laptop, so I want to move out of the laptop's environment. The clarity of video will be good. So those are the things that I want to do. Inshallah, let's see if I will be able to do that. So now I will start looking at, oh, Mr. Prakar Saxena, thank you very much. You are the first person to give me $100. I will take a picture and we will remember this. Thank 100 rupees, but that's such a generous thing from you. Thank you very much. and request that you do not, oh, I forgot. And so yes, I will do this thing on US Constitution and India. That is a very good point. Not many people know that India and the US are very, very similar countries constitutionally speaking. America is a federalist country, which means that all the states of America are like independent countries which have come together. So, for example, in India, we have only one Supreme Court. In America, every state has a Supreme Court, every state has a flag, every state has an anthem. It's like different countries. In fact, for a while, America was not the United States, it was these United States of America. यानी अमेरिका एक मुल्कों का यूं कहिए कि कलेक्शन था. तो ये सारे independent states. So the federalism comes from there. It's a division of power. Some rights belong to America, some belong to states. And India is also a federalist, like America. India's constitution has many aspects which have been borrowed from the US Constitution. One is federalism. That's why states have some rights and the country has some rights. And very similar one, education, morality issues are state-based. And the second thing is that America has a Bill of Rights, which identifies the rights of the individual, which are very, very critical. They have impacted the world and promoted human rights everywhere. And what is also true is India also has those rights, especially from I think Article 15 to 25, you can see the rights of individuals, which are around that, around 15, 16, 20, 25, up to 30. You can see rights in the Indian Constitution. So yes, it merits an independent show. And thank you very much. I will do a show. In fact, I'll try to bring a special Indian constitutional specialist who is in the US, who is capable of discussing both. So that is one thing I will definitely do. And a lot of you have also asked me to bring more American scholars, and I'm trying to do that. I have been very successful in the last month to bring in two very distinguished Indian ambassadors, though बहुत ही important Indian राजदूत कहते हैं, राजदूत ambassadors को लेकर आया हूँ. तलमीज़ अहमद आए, केतन शर्मा जी आए. केतन शर्मा जी के साथ तो मेरी रोज़ गपशप होती रहती है व्हाट्सएप पर. And I've learned a lot from him. And I was very surprised at how quickly Talmiz Ahmed Saab agreed to come on the show. तो मैं उनसे भी बात करूँगा और उनको भी at least 2 महीने में एक बार लाने की कोशिश करूँगा. These are big guns and I don't want to fire big guns on small issues. So कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात होती है, something important happens, I want to bring them in so that they can deliberate on this important issue. Yes, and the next thing is to try to see if I can get more and more American
Uh, about 2 months ago, I spoke to U.S. Senator Chris Coons, and talked about India. It was very interesting. उन्होंने कहा कि इस सेंचुरी की सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता दुनिया में अमेरिका और इंडिया का है. इंडिया एंड यूएस रिलेशंस आर द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल. बहुत ही ज़बरदस्त अल्फाज. ये एंथनी ब्लिंकन की फ्रेमिंग है जो उन्होंने इस्तेमाल किया था. I'm looking at the questions. They are moving a little too fast for me, but जितने मैं देख सकता हूँ, I will definitely try to respond to them. And इंडियन जुडिशरी, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर जुडिशरी सिस्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कबीर साहब आपका. देर आर 3 or 4 थिंग्स. एक डेमोक्रेसी के लिए 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम सेइंग दिस ऑफ द कफ. एक तो एक कि पब्लिक पेज अटेंशन, क्या पब्लिक नॉलेजेबल हो और वो अपने लीडर्स को अकाउंटेबल रखें, उनसे सवाल पूछें. जब वो आते हैं मेले में, इसमें उसमें मंदिर में, उन्हें उनसे सीरियस सवाल पॉलिसी के ताल्लुक से पूछें. और जब ये इलेक्टेड ऑफिशियल्स को पता चल जाता है कि पीपल आर नॉलेजेबल and are asking questions, they will also up their knowledge so they don't look stupid when they are answering questions. So you need public which is more informed. The more informed the public is, not propaganda, not from TV, not from YouTube channels which are only interested in, आपका जोश बढ़ा के views लेने के लिए नहीं, who inform you, like Khanversations. So the public should be more informed. The more informed the public is, the more democratic the country can become. Number one. Number two, जो ये है कि elections वगैरह थोड़े have to be very fair, etc. But 2 other pillars are independent judiciary, independent media. ये बहुत important है. अगर the judiciary का बहुत सबसे बड़ा important role है कि एट द फेडरल लेवल कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करे, कि गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है. और दूसरी चीज़ ये है कि एट द इंडिविजुअल लेवल वो इंडिविजुअल के हुकूक को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द गवर्नमेंट. दिस इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी. ये नहीं कि खाली सजा दे मुजरिम को, लेकिन अगर गवर्नमेंट आपके खिलाफ गलत स्टेप बढ़ाती है तो कोर्ट्स का काम ये है कि दे प्रोटेक्ट यू. और एक फिलोसॉफिकली एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड रीजनेबल डाउट, वो भी बहुत अहम है जो जुडिशरी को सीखना चाहता है. सो वी नीड टू हैव बेटर ट्रेन्ड जजेस, बेटर ट्रेन्ड लॉयर्स, जजेस हु आर टेन्योर्ड एंड इंडिपेंडेंट. उनको पता है कि गवर्नमेंट का उन पे जोर नहीं पड़ सकता. देखिए, ये बात आप लोग ज़रा बहुत गौर से सुनिए. इंडिया इज़ एट ए मोमेंट, कह सकते हैं कि रॉकेट की तरह है, जस्ट टेक ऑफ. अगर इंडिया टेक्स ऑफ, आइंदा 10-15 साल बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया. इफ इंडिया टेक्स ऑफ, then it will become one of the top 3 powers in the world with the US and China. और US को चाइना और इंडिया पीछे छोड़ते चले जाएंगे. So what has happened if India gets all of its ducks in a row in the next 10 to 15 minutes? कोई जंग ना हो बाहर से, कोई इंटरनल बड़े तमाशे ना हो जिससे मुल्क पीछे हो जाए, इन्वेस्टर्स भाग जाए. So if India remains calm and peaceful and focuses on economic development, it will go like a rocket straight up. और उसके बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 2070 2060 के बाद से 200-300 साल तक इंडिया विल probably dominate the world. Because हिस्ट्री में अगर आप देखें, पहले एशिया का डोमिनेशन था, पिछले 200-300 साल से सिर्फ यूरोप ने डोमिनेट किया, और फिर इंडिया, चाइना, जापान आर ब्रिंगिंग एशिया बैक. जब एशिया वापस आ जाएगा तो एशिया हमेशा से रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कॉन्टिनेंट रहा है, एंड इट विल रिमेन सो. जयशंकर साहब कहते हैं दिस विल बी द सेंचुरी ऑफ एशिया इफ इंडिया एंड पाकिस्तान कैन गेट देयर एक्ट टुगेदर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि self goal na kare, that we do not do anything that will harm the country internally or externally. So this is an important part of the future for India. So that is one of the messages that my goal is to focus on, that look, this is a chance for us. So मुझे साफ नज़र आ रहा है कि बस तो निकल पड़ी है, बस अब डेस्टिनेशन के लिए पहुंचना है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, लेकिन आई एम एबल टू एटलीस्ट मैं बस को अपने कैमरा पे देख सक रहा हूँ, एंड आई एम विथ यू इन स्पिरिट. इनफैक्ट अभी मेरे बच्चे कॉलेजेस में हैं. वंस द किड्स आर थ्रू कॉलेजेस, आई विल ट्राई टू फाइंड मोर एंड मोर रीजंस टू स्पेंड एटलीस्ट 1 semester every year
इन इंडिया, ये गोल है। और ये कोशिश मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मोदी का पढ़ रहे हैं, द टाइमिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने उसको फाइंड कर लिया यूट्यूब, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। सो पहला एपिसोड देख रहा था। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि 2002 के जो दंगे राइट्स गुजरात में जो मारधाड़ हुई थी, उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट्स की थी। और बेसिकली ये कहना है कि मोदी साहब ने बेसिकली पुलिस को कह दिया कि 2-3 दिन का वक्त दे दो ताकि मुसलमानों को सबक सिखाया जाए। सो दैट इज़ द मैसेज ऑफ बीबीसी। आई हैव नॉट सीन इट फुल्ली, और सेकेंड एपिसोड तो शायद आज दिखाया जाएगा। But the timing is very interesting. Like I said, India is about to take off. 2023 में इंडिया G20 का भी प्रेसिडेंट है, SCO का भी प्रेसिडेंट है। इंडिया में 200 से लेकर 300 तक कॉन्फ्रेंसेस होंगी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। मेरी बेगम और बेटी अभी पुणे से वापस आए 2 दिन पहले, और कह रहे थे पुणे में तो इतना धूमधाम हो रहा है, दे आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर G20, सब तैयारियां हो रही हैं, सफाइयां हो रही हैं, पेंट्स हो रही हैं। सो इंडिया इज गेटिंग रेडी टू हैव दिस मेजर इवेंट, जहाँ पे इंडिया विल बी शोकेस्ड ऑन द वर्ल्ड। मैं कई बार कहा और एक छोटा सा शो भी किया हूँ, सेइंग दैट दिस इज बोथ ए टेस्ट एंड ए टेस्ट ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। तो एक इंडिया को थोड़ा जायका टेस्ट आएगा कि व्हाट इट मीन्स टू बी ए ग्लोबल लीडर, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, एंगेजिंग विथ द टॉप नेशंस इन द वर्ल्ड। प्लस इट्स ऑल्सो ए टेस्ट कि कैन इंडिया डिलीवर एज ए ग्लोबल लीडर। बोलना आसान है, करना मुश्किल है और एक्सपेंसिव है। सो दैट इज द थिंग। सो आई थिंक दैट बीबीसी इज, जिस तरह से देखें ना आप कि कतर में जब वर्ल्ड कप हो रही थी तो कतर के खिलाफ काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें बोली, तो बीबीसी इज काइंड ऑफ बीइंग क्रिटिकल ऑफ इंडिया। अगर वो साथ साथ पॉजिटिव वीडियोस भी करती हैं डॉक्यूमेंट्रीज की, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री, इंडिया का सिविलाइजेशन, और एक डॉक्यूमेंट्री ऑन हाउ द ब्रिटिश लूटेड इंडिया। उन्होंने तकरीबन, शशि थरूर कहते हैं कि $40 ट्रिलियन तक शायद अंग्रेज़ों ने लूटा है। तो इंग्लैंड की जो रिचनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, इट इज स्टोलन फ्रॉम इंडिया। और फिर वो अब लेक्चर दे रहे हैं इंडिया को। बट नेवरदलेस, सो देयर इज, यू कैन आर्ग्यू के देयर इज एन अटेम्प्ट टू पुट इंडिया इन इट्स प्लेस थ्रू दैट। एंड वन वे टू डू दैट इज, इंडिया में इतने बड़े बड़े टेलीविजन थे, अंदानी साहब से कहें अब NDTV खरीद लिए, व्हाई डोंट यू डू अ 10 पार्ट सीरीज ऑन ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर आए, हिस्ट्री निकाल के पोल खोलें कि अंग्रेजों ने इंडिया में क्या किया, लूट मार। सो दिस कैन बी डन नाउ। इंडिया हैज द रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज। ये बेकार मूवीज बनाते हैं, नाच गाना। व्हाई नॉट डू समथिंग वेरी सीरियस, ए टॉप क्लास डॉक्यूमेंट्री ऑन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ना सिर्फ इंडिया, बताएं सारी दुनिया में कहाँ कहाँ ये लूट मार करके आए। इंडिया को यशवंत साहब कहते हैं, यशवंत निषाद, इंटरेस्टिंग नाम। यशवंत साहब पूछते हैं इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप। इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप सर, केतन शर्मा साहब मेरे शो पे कह रहे थे कि मुख्तदर तुम बचपन से सुन रहे होगे, कॉलेज में थे जब से हम सुन रहे हैं इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप कब मिलेगी। देखिए, एक मैं मजे की बात बताता हूँ कि बाद यूरोपियन कंट्रीज में वुमेन को वोट देने का हक नहीं था, तो वो बार बार रेफरेंडम करते कि शुड वुमेन बी गिवन राइट टू वोट, लेकिन वोट डालने वाले खाली मेन थे, तो वो दे वुड ऑलवेज वोट नो। सो वुमेन के लिए ये डिलेमा था हाउ टू गेट वोटेड। सो द सेम थिंग इज हैपनिंग एट द UN। अनलेस द परमानेंट मेंबर्स वोट, इंडिया को वोटिंग की, परमानेंट मेंबरशिप की वोट नहीं मिलेगी। और व्हाई वुड दीज 5 कंट्रीज वांट टू शेयर पावर? और खास तौर से नाउ दैट इंडिया हैज बिकम अ बिगर इकोनॉमी देन फ्रांस, बिगर इकोनॉमी देन ब्रिटेन, तो जो दो मेरे ख्याल से जो परमानेंट मेंबर्स है वो तो रहने ही नहीं चाहिए। ना सिर्फ इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, अफ्रीका से एटलीस्ट एक मुल्क को, और लैटिन अमेरिका से एक मुल्क। सो बेसिकली इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील को मिलना चाहिए। जापान ऑल्सो डिजर्व्स, लेकिन ये जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया नीड टू लूज देयर परमानेंट। इट्स यूजलेस, दे डोंट डिजर्व इट, दे डोंट प्ले अ मेजर रोल इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगता कि अनलेस खुदा ना खास्ता कोई सिक्योरिटी रिलेटेड बड़ी ट्रेजेडी हो, देखिए ऑलरेडी UN हैज फेल्ड विथ रिगार्ड्स टू रशिया एंड यूक्रेन। तो UN की इतनी फेलियर्स
जमा हो जाए कि मजबूरन द वर्ल्ड डिसाइड्स टू रीडिजाइन द यूएन, उस सूरत हाल में आई थिंक इंडिया विल गेट ए परमानेंट मेंबरशिप। वरना करंट सिचुएशन में दे में ऑफर इंडिया ए परमानेंट मेंबरशिप विदाउट वीटो। वो G4 कहते हैं, G4, इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राजील। तो इनको शायद देयर इज सम टॉक फ्रॉम फ्रांस एंड ऑल कि इनको दें मेंबरशिप परमानेंट, यानी हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल में ये होंगे, लेकिन दे विल नॉट हैव परमानेंट मेंबर्स एंड आई थिंक दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। इंडिया शुड सिंपली रेजिस्ट दैट। इंडिया हैज बिकम अ वेरी बिग कंट्री भाई, मतलब 1 out of 6 persons in the world are India, and ऐसे फालतू नहीं है, we are leaders of the industry worldwide। शिवंग मिश्रा साहब, आपको भी मेरा नमस्ते। अ, अ, दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन मतलब लोग थोड़ा मजाक उड़ाते हैं जब ये कॉन्सेप्ट ऑफ विश्व गुरु आता है। दैट इज़ नॉट ए जोक, इट इज़ सीरियस। कि इंडिया, अगर आप मिडल ईस्ट में चले जाएं, जितने भी नॉलेज बेस्ड जॉब्स हैं वो मोस्ट ऑफ देम गो टू इंडियंस, engineers, managers. India produces more engineers, more doctors, more MBAs than the whole of Europe combined. तो नॉलेज बेस, हम नॉलेज बेस्ड लोगों को एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया के डायस्पोरा में हम लेबर नहीं भेजते, हम इंजीनियर्स भेजते हैं, डॉक्टर्स भेजते हैं। सो ऑलरेडी वी आर लाइक विश्वगुरु, वी आर प्रोवाइडिंग दुनिया को एक सहूलत, एक उपलब्धि, एक पब्लिक गुड पहुंचा रहे हैं। ये पब्लिक गुड वर्ड को आप जरूर गूगल करें, इन्वर्टेड कॉमर्स, व्हाट इज द पब्लिक गुड, समझे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया प्रोवाइड ग्लोबल पब्लिक गुड्स विच आर नॉलेज बेस्ड। आपको पता है दुनिया में एक छोटा सा इकोनॉमिक मिरेकल हुआ है यूरोप में। आयरलैंड विच वाज द पुअरेस्ट कंट्री इन यूरोप बिकेम द रिचेस्ट कंट्री इन यूरोप, बहुत तेजी से 10-15 साल में। एंड इट बिकेम दैट बिकॉज इट बिकेम लाइक यूरोप का सिलिकॉन वैली बन गया वो। बट गेस व्हाट, वेयर डिड द टेकीज कम? द टेकीज केम फ्रॉम इंडिया। मैं आयरलैंड में एक शहर है कॉल्ड गॉलवे, GALWAY, वहाँ पे मुझे बुलाया गया था टू गिव अ लेक्चर। तो उनके पास एयरपोर्ट नहीं था, मैं शैनन में लैंड किया, कार लेके रात में पहुंचा, सो गया। सुबह उठ के जब मैं नाश्ते के लिए निकला तो रेस्टोरेंट में देखता हूँ तो बल्ले बल्ले 2-3 मुझे सरदार जी ब्रदर्स मिले, मैं उनसे बातों में उनके साथ ही नाश्ता किया। आई वेंट एंड जॉइन देम ऑन देयर टेबल। इतना मजे की बात है, दे वर ऑल IT इंजीनियर्स। फिर हम जब बाहर निकले फॉर अ वॉक, there were like hundreds of engineers in Galway, Ireland, और मैं ये 207 या 208 की बात, 2008 की बात है। So India is providing that. So India is a leader in every which है। ये और बात है कि जो हाल बना रखा था इंडिया का, जो लूट लूट के अंग्रेजों ने, so we came out of independence poor, devastated, with a lot to repair at home, you know। वन ऑफ द अचीवमेंट्स जो मोदी क्लेम करते हैं, नरेंद्र मोदी के, कितने की 6 लाख या 6 मिलियन को टॉयलेट्स बनाए। सो बेसिक एमिनिटीज पब्लिक के पास नहीं थी। सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट एंड आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया हैज अ लॉट टू ऑफर। इंडिया का जो एक्सपीरियंस है विद नॉलेज डेवलपमेंट, उसके बेसिस पे ही अलोन इंडिया डिजर्व्स टू बी ए ग्लोबल लीडर। और अनुराग साहब, ओ टू अनुराग, अनुराग भगत साहब ने कुछ पूछा तो नहीं है, अनुराग सिंह साहब ने भी नहीं पूछा। मैं जयपुर आना ज़रूर पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू कम टू द जयपुर। लिटरेरी बुक फेस्टिवल भी है। मैंने विलियम डाल रिम्पल को इंटरव्यू किया अबाउट हिज बुक एनर्की, तो आप ज़रा वो देखें। इफ़ यू जस्ट गो टू यूट्यूब में, आफ्टर यू गोइंग टू कॉन्वर्सेशंस, वहाँ अबाउट के बाद देखें, वहाँ साइन होता है सर्च। अगर आप सर्च करें विलियम डाल रिम्पल, तो वो भी मुझे कहेंगे जयपुर ज़रूर आए एंड ट्राई टू अंडर। आई विल डू। मैंने आई हैव नॉट सीन जयपुर, आई हैव नॉट सीन राजस्थान, ये 2 चीज, और केरला, दीज 2 थिंग्स। मैंने बाकी हर जगह मैंने ना सिर्फ देखा भी है, क्रिकेट भी खेला है। कश्मीर में भी क्रिकेट खेला है। दिल्ली में आई मेट जेल सिंह एंड राजीव गांधी। जब आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम दिल्ली में। अभी भी आया था इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के लिए। हाँ, somebody called विपुल भारद्वाज ने एक जबरदस्त सवाल पूछा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, दिस इज अ प्रॉब्लम। सी देखिए, ये जो हिंदुइज्म में, बिकॉज देर आर मेनी गॉड्स, अगर आप कहते हैं कि मैं विष्णु को पूजा करता हूँ, दूसरे कहते हैं मैं शिवा को कर रहा हूँ, मैं राम की पूजा करता हूँ, इट्स ओके। बट
जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़्म है, ये मोनोथीस्टिक रिलीजन है, वन ऑफ द कोर बिलीव्स इज दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड। तो उसमें ये हो जाता है, दे बिकम वेरी इंटॉलरेंट अबाउट अदर गॉड्स। बट इन रिलीजन्स में भी देयर आर सोर्सेस फॉर रिलीजियस प्लूरलिज्म। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, द 6th चैप्टर ऑफ द कुरान में लिखा हुआ है कि आप किसी की दूसरों के रिलीजियस सिंबल्स का मजाक हरगिज ना उठाएं। If you make fun of other religious symbols, they will make fun of your religious symbols. So you are inviting insult to God and His messenger. So yes, these are things. But the problem is कि जो रिलीजियस लोग होते हैं ना, जिसका धंधा रिलीजन पे चलता है, अगर वो कह दें कि भाई डजेंट मैटर कि आप मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या जूइश हो, जब तक कि आप अच्छे इंसान हो, इट इज़ गुड। आप दुनिया में आपकी वजह से फ़ायदा हो रहा है लोगों को, तो दिस इज़ गुड। लेकिन अगर रिलीजियस बंदा ये कह देता है, तो देन उनका धंधा बंद हो जाएगा, बिकॉज देन यू विल से ओके, तो मैं लोगों की खिदमत करूँगा, आपके पीछे आके क्यों आपको पैसे दूँ, मैं क्यों बड़े बड़े मंदिर मस्जिद बनाऊँ, व्हेन आई कैन यूज़ द सेम थिंग टू फाइट पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। तो फिर उनको डोनेशंस नहीं मिलते, फिर उनकी बेसिकली दाल रोटी बंद हो जाती है। सो अ प्रॉब्लम विद रिलीजियस, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस पीपल, जिनके मैनेजर्स हैं, जैसा पीके में कहते हैं ना, रिलीजियस मैनेजर्स, इन्होंने ये डिविजन्स को ज़्यादा एम्फसाइज किया है। और एंड उस वहाँ पर भी जैसा मैंने कहा कि डेमोक्रेसी में इफ़ यू आर ए वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, देन यू कैन होल्ड योर लीडर्स अकाउंटेबल। हमारे पास क्या हुआ, स्पेशली कॉलोनाइजेशन की वजह से, ऑल पीपल ऑफ द रिलीजन्स, उनको अपने रिलीजन के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, बिकॉज पढ़ाते नहीं है उनको, ना तो स्कूल्स में पढ़ाते हैं, ना देर आर प्राइवेट सोर्सेज अब इमर्ज हो रहे हैं। सो पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट देयर रिलीजन, सो दे ट्रस्ट द मुल्लाज एंड द पंडिट्स ए लॉट। लेकिन अगर आप अपने रिलीजन के बारे में मालूम रखते हैं, देन इफ समवन सेज समथिंग, यू से दैट इज रबिश, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, 1.5-2 साल पहले एक इमरान खान ने कहा था कि मैं इस्लामाबाद में एक टेम्पल बनाऊंगा, या टेम्पल टूट गई थी, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वांटेड टू रिपेयर द हिंदू टेम्पल इन इस्लामाबाद। तो जाकिर नायक ने फतवा दे दिया कि ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बिल्ड टेम्पल्स इन इस्लामिक कंट्री, यू कैन नॉट बिल्ड न्यू टेम्पल्स, इस तरह की आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है। एंड आई वाज हॉरिफाइड, दैट इज सो un-Islamic. There is clear evidence in the Quran, there is clear evidence in the Hadith that that is not true. लेकिन लाखों करोड़ों जाहिल uneducated लोग, they follow him, they may be medical doctors, they may be engineers, but they don't know their tradition, so they don't know that this preacher जिनकी वो बहुत इज्जत करते हैं, वो खड़े खाम झूठ बोल रहा है। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, रिलीजियस सिंबलिज्म इक्वालिटी उससे बढ़ेगी जब मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ। मेरा फर्स्ट नाम गूगल में जाके टाइप करें, मुख्तदर, इस्लाम, हिंदुइज्म, ट्रुथ, ये 4 लफ्ज, मुख्तदर, इस्लाम, हिंदुइज्म, ट्रुथ। मैं बाद में इसको ट्विटर पे भी लगा दूंगा आर्टिकल। मैंने ये 20 साल पहले आर्टिकल लिखा था कि जब मैंने पहली बार महाभारत पढ़ा था, तो महाभारत में एक एपिसोड है, ड्यूरिंग द फाइट, बेसिकली द्रोणाचार्य, द पांडवास वर हैविंग ट्रबल, द्रोणाचार्य उनकी बड़ी पिटाई कर रहे थे, उनके उस्ताद भी थे, एंड दे वर ऑल वेरी रिस्पेक्टफुल, दे डोंट नो व्हाट टू डू, वो मार ही नहीं सक रहे थे। तो कृष्ण उनको आइडिया देते हैं कि उनके बेटे को मार दो, और द्रोणाचार्य के जो बेटे थे अश्वत्थामा, उनको मार डालो, तो फिर ये अपसेट हो जाएंगे, फिर इनको मार दो। वो तो दिन भर वो ट्राई करते हैं, वो द्रोणाचार्य का बेटा है, उसको दे कुड नॉट किल हिम। फिर दे कम अप विद एन आइडिया कि उस नाम के हाथी है, वो हाथी को मार दो, एंड देन वी विल स्प्रेड द रूमर कि अश्वत्थामा मर गया, एंड देन द्रोणाचार्य विल बी अपसेट, एंड देन वी कैन किल हिम। तो जब ये अफवाह फैलती है कि अश्वत्थामा इज डेड, द्रोणाचार्य लुक्स एट युधिष्ठिर एंड सेज, धर्मराज, इज इट ट्रू? इट इज इंटरेस्टिंग, आई लाइक द वर्ड धर्मराज ऑल्सो, मैंने उस पर भी लिखा है। तो युधिष्ठिर धीरे से कहते हैं, यस अश्वत्थामा द एलिफेंट इज डेड। तो वो दी एलिफेंट वो छोटे से कहते हैं, एंड सो द्रोणाचार्य अपने हथवार फेंक देते हैं, एंड ही इज किल्ड। बट वहां पे एक लाइन थी जो मैं 5th ग्रेड में था, मैं बता रहा हूँ, व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, तो उसमें लिखा हुआ था नीचे कि until that moment
ये जिस तरह की रथ ज़मीन से ऊपर हुआ करती थी हमेशा, क्योंकि वो ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। बट एट दैट मोमेंट, इवन दो ही टेक्निकली डिड नॉट लाई, ही लाइड इन स्पिरिट, तो उनकी रथ ज़मीन पे आ गई, यानी वो ऑर्डिनरी आदमी बन गया, आपकी तरह मेरी तरह झूठ बोलकर। दैट स्टेड विद मी द पॉइंट ऑफ ट्रूथ, बिकॉज जब हम हुजूर के बारे में, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में बताते हैं, देयर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ he never lied in his life. That's why everybody used to call him Al-Amin, the truthful. So this is an important point, and it is emphasized. So to me, it looks like, अरे हाँ, कैसा सब religions emphasize the importance of being truthful. So that's the lesson. As a fifth grader, I drew. I did not say, oh, this means that Islam is true, or this means that Hinduism is wrong. ये मैंने नहीं conclude किया. I concluded कि truth is important. So that is how we need to find. अगर आप, for example, मैंने एक किताब लिखी called एहसान. उसका simple concept in Hinduism is darshan. So there are lots of shared values. We need to talk more about these shared values and appreciate and value them. उससे भाईचारा बढ़ेगा. ये नहीं कि हर रोज डिफरेंसेस को एम्फसाइज करें, और एक अगर किसी मज़हब का एक आदमी एक काम करता है तो पूरा रिलीजन को उस पर ब्लेम कर दे. इनफैक्ट नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल या परसों ही अपने पार्टी वालों को कहा कि फजूल स्टेटमेंट्स ना दिया करें. इससे जो मेहनत कर रही है इंडिया, जो हार्ड वर्क कर रही है टू बिकम टू ग्रो एंड हेल्प इट्स पॉपुलेशन, वो सारा का सारा पानी में मिल जाएगा विथ वन और टू statements, you know. So this is some of the things that we need to do. आप लोग मुझे भिजाते जाइए एडवाइजेस, सजेशंस, आपके लोगों से शेयर करिए. मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आते हैं कि यूपीएससी से के जो लोग पढ़ रहे हैं उनको हेल्प करें. आई डोंट नो द फुल स्ट्रक्चर. हालांकि मुझे याद है द लास्ट 3 months जो मैंने इंडिया में गुजारे हैं वेटिंग फॉर माय वीज़ा टू कम टू द यूएस इन हैदराबाद, तो दो दो मेरे फ्रेंड्स थे. एक रजी साहब थे, एक आमिरुल्लाह खान थे. दे वर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, और दे बोथ गॉट इन, वन इन आईएएस एंड वन इन आईपीएस. तो मैं उनके साथ बैठकर बातें बातें करता था. सो आई यूज्ड टू सी हाउ हार्ड दे स्टडी. सो आई कैन फोकस ऑन सम इश्यूज स्पेसिफिकली, थ्योरेटिकली मैं बता सकता हूँ. तो आप लोग मुझसे अलग से कांटेक्ट किया करें. वी कैन डू स्पेशल सेशंस फॉर दैट. बट अप्रोच ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज यूएस में ज़रा अलग है, इंडिया में थोड़ा अलग है. सो इट मे और मे नॉट हेल्प. इंडिया चाइना के बारे में काफ़ी सवालात आ रहे हैं. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए, इंडिया में पिछले जब से वो गलवान का एपिसोड हुआ है, एंटी चाइनीज सेंटिमेंट बहुत बढ़ गए हैं. एंड सी, 2-3 चीज़ें होती हैं. एक चीज़ कहना है चीज़ को समझें, और दूसरी चीज़ को एक्सप्लेन करें. अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेनेशन में बहुत फ़र्क है. ठीक है, लेट्स से कि मैं अभी गालियां देना शुरू कर दूं. लेट्स से जस्ट हाइपोथेटिकली सडनली आई स्टार्ट गिविंग गालियां, और फिर 1 मिनट के बाद चैनल बंद हो जाता. सो आइदर यू कैन से अरे ये तो मुसलमान है, मुसलमान बहुत ही बेकार लोग होते हैं इसलिए ये गाली दे रहा था. इट्स एन एक्सप्लेनेशन, बट इट इज़ नॉट अ ट्रू अंडरस्टैंडिंग. अगर आप यहाँ होते, आके मुझे देखते, तो ये कहते अरे भाई बंदे को तो स्ट्रोक हो गया था, एंड दैट्स व्हाई ही लॉस्ट इट, एंड ही वाज मम्बलिंग वर्ड्स. और वो गाली भी नहीं थे, गौर से सुनो, वो जस्ट जम्बल्ड वर्ड्स हैं. सो अंडरस्टैंडिंग इज टू ट्राई टू रियली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ क्यों हो रही है, एज अपोज टू से टू प्रोवाइड एन. जैसा लोग कहते हैं ओ पुतिन पागल हो गया इसलिए यूक्रेन को इन्वेट कर दिया. नहीं, अगर आप तहकीक करेंगे तो देखेंगे पिछले 10 साल से नेटो ईस्टवर्ड एक्सपैंड हो रहा है और रशिया पे प्रेशर डाल रहा है. वो एक वजह थी. सो अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन में बहुत फ़र्क होता है. सो इंडियंस नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन विद चाइना. जैसा इंडिया क्वाड में करीब करीब आते जा रहा है अमेरिका के, इट्स मेकिंग चाइना वेरी नर्वस, और चाइना इज टेलिंग इंडिया कि भाई आप उधर अगर जाके, बिकॉज क्वाड का मकसद ही चाइना को कंटेन करना है. सो दे आर गेटिंग वेरी नर्वस. यू हैव टू हैव ए standing dialogue with China, both political and military.
मज़ाक से भी यहाँ पर मैंने कई लोगों से कहा कि भई 2 मुल्क बहुत तेज़ी से इकोनॉमिकली बढ़ रहे हैं, इनके पॉपुलेशंस भी बढ़ रहे हैं, इनके डायस्पोराज़ भी बन रहे हैं, ये दुनिया को डोमिनेट करेंगे। अगर इन दोनों को लड़ा दिया जाए, तो इधर भी 10 लाख, उधर भी 10 लाख मरेंगे। ये एक-दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, जिससे इन दोनों की तरक्की रुक सकती है और दूसरे मुल्क जो अभी आगे हैं, वो आगे ही रहेंगे। सो देयर इज़ दैट, मज़ाक से कहते हैं, बट देयर इज़ दिस इंटेंशन कि अगर जंगी सिर्फ क्लोज टू वॉर आए तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स गैर ज़रूरी हथियारों पे खर्च होंगे, और आप जानते हैं हथियार कहाँ से खरीदे जाएँगे। सो इंडिया एंड चाइना के जो ताल्लुकात है, दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल। इंडिया का सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2022 में सिर्फ 2 मुल्क हैं जिनसे $100 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड होता है, वो यूएस है और चाइना है। इंडिया को यूएस की बहुत ज़रूरत है, और इंडिया को इस बात की भी ज़रूरत है कि चाइना से झगड़ा ना करें। सो व्हाट द इंडिया हैज़ टू डू इज़ टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद बोथ। यही जयशंकर साहब करते हैं। मल्टी अलाइनमेंट की जो पॉलिसी वो बार-बार दोहराते हैं, दैट वी बिलीव इन ए मल्टी अलाइनमेंट, यानी वी आर नॉट नॉन अलाइन्ड पहले की तरह। नॉन अलाइन्ड मीन्स हम किसी के साथ नहीं हैं। मल्टी अलाइनमेंट में हम सबके साथ हैं। सो दैट इज़ अ गुड पॉलिसी। उसको कज़ाकिस्तान वाले मल्टी वेक्टर पॉलिसी कहते हैं। सो देयर आर मेनी कंट्रीज़ हू आर अडॉप्टिंग। सऊदी अरब भी कह रहा है कि मैं रशिया से भी ताल्लुकात रखूँगा, अब चाइना से भी कर रहा है, और अब यूएस के साथ तो है ही उसके ताल्लुकात। सो देयर आर कंट्रीज़ विद दैट। सो इंडिया विल हैव टू, इट्स लाइक अ टाइट रोप वॉक, or it must try its best. And I think कि इंडिया शुड पब्लिकली कहे कि वी एक्सेप्ट द वन चाइना पॉलिसी, एंड हम हमारी फौजें, हम हमारे बच्चों को नहीं भेजेंगे ताइवान की आज़ादी के लिए मरने के लिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यू डोंट वांट इंडियंस डाइंग फॉर ताइवान्स इंडिपेंडेंस। ताइवान इज़ जिस सूरत में है, इट्स डूइंग वेरी वेल। बहुत ज़बरदस्त डेमोक्रेसी है, बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमी है, वो रहने दें। You don't want to become an instrument of America's global war against China. अमेरिका ने मदद की चाइना की टू बिकम सो रिच एंड पावरफुल पिछले 30-40 साल से। नाउ वी आर ट्राइंग टू कंटेन इट। अब तो वीज़ा भी नहीं दे रहे हैं चाइनीज स्टूडेंट्स को। मैं देख रहा था, हम इसी सीज़न में पीएचडी के एप्लीकेशंस चाइना से एक भी नहीं था हमारे पास। यूजुअली बहुत आते हैं। सो द चाइनीज स्टूडेंट्स आर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग, क्योंकि उनको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। सो द टेंशन तो बढ़ रहा है, एंड इंडिया इज इम्पॉर्टेंट। 1, 2, 3 साल की अगर इकोनॉमी में टेंशन आ गया तो इट विल ब्रेक द रिदम, और फिर इंडिया में पीपल इतने इमोशनल है, फिर डोमेस्टिक टेंशन्स बढ़ जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया मेंटेन ए पॉजिटिव अप्रोच, एंड मतलब कीप द आई ऑन द बॉल। बॉल पे से आउट आँख हटाए तो बोल्ड हो जाओगे। देखा विराट कोहली इतने बड़े फॉर्म में 166 मारा, फिर 8 या 9 पे बोल्ड हो गया, वो भी सेंटनर के बॉल पे, बिकॉज़ ही डिड नॉट keep his eye on the ball. So this is important. India is in good form now, और ये फॉर्म को लेके आगे जाएं। 2023 is very important for India from global perspective. At the end of the year, India could come out as a major leader. देखिए, इकोनॉमी एक साल में जिप बोल के नहीं बढ़ेगी। मिलिट्री कैपेबिलिटी एकदम तेजी से नहीं बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक पावर नहीं बढ़ेगा, मिलिट्री पावर वो धीरे धीरे बढ़ता है टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, 2 साल, 5 साल, 10 साल। लेकिन सॉफ्ट पावर बहुत तेजी से बढ़ सकता है। इंडिया का इमेज, जो लोग इंडिया पे अटेंशन नहीं पे कर रहे थे, अब वो मजबूर हो गए बिकॉज ऑफ G20। कई लोग आएंगे बाहर से, देन दे विल गो बैक एंड टॉक अबाउट इंडिया टू देयर पीपल, टू देयर मीडिया, टू देयर लीडर्स वगैरह। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया हैज अपॉर्चुनिटी टू मल्टीप्लाई इट्स सॉफ्ट पावर। तो दुनिया में अब फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों को मिलाकर balance करके is called smart power. So that is what people are going. Aditya ji, thank you very much for your love. Krishna साहब, thank you very much. यूसीसी की बात, हाँ माधव मलेश अधावनी साहब ने यूसीसी की बात, यूसीसी की बहुत जिक्र निकलेगा। जी, यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। यानी द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सेइंग कि ये है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज एस्पिरेशनल है, यानी हम चाहते हैं कि ये हो जाए। सो इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव टू डू इट राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में तो हाउसिंग भी मेरे ख्याल से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। अभी वो बुलडोज करके लोगों के घर तोड़ रहे हैं जो इलीगल है, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि उनको घर भी दिया जाए।
किसी ने ये बात नहीं उठाई। आप जाके देखें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसा यूसीसी का है, उस तरह हाउसिंग का भी है, एजुकेशन का भी है। So they want states to move forward to do this. और यूसीसी को तो पॉलिटिसाइज कर दिया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई डोंट अंडरस्टैंड फ्रैंकली कि ये जो दो तीन चीज़ों पे जो इंडियन मुल्लाज अड़े हुए हैं विद रिगार्ड टू मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये बेसिकली फोर मैरिजेस एंड द काइंड ऑफ तलाक दे डू, और थोड़ा बहुत इनहेरिटेंस। मैं अमेरिका में रहता हूँ, अमेरिका में है ही नहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे मुसलमानों को, वी लिव अकॉर्डिंग टू दिस। देखिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना टू बी ए मुस्लिम, वो ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन करता है ना अमेरिका। तो मुसलमान बनने के लिए आपको जो जो आपको करना चाहिए वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरी आज़ादी देता है। खुदा में यकीन करो, कौन रोकता है? नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, गरीबों की खिदमत करो, दुनिया की खिदमत करो, कौन रोक रहा है आपको? और ये जो चार शादी वगैरह हैं, दीज आर नॉट अ रिक्वायरमेंट्स, दीज आर सेइंग कि भाई अगर आपको ज़रूरत पड़े, लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसी लड़की दिख जाती है जिसके माँ बाप सब मर गए, शी इज़ बेगिंग ऑन द स्ट्रीट, शी कुड बी एक्सप्लॉइटेड, उसको हेल्प करने के लिए अगर आप शादी कर लें, दैट इज़ फाइन। अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, यू वांट टू हैव किड्स एंड यू कैन प्रूव दैट इट्स द वुमन हु इज इनफर्टाइल नॉट यू, देन यू कैन डू इट विद द परमिशन ऑफ द फर्स्ट वाइफ। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस है, इट्स नॉट लाइक अ प्रिविलेज कि आप अय्याशी करने के लिए शादियां करें दो तीन। ये मुल्लाओं ने बना ली हैं, दे आर ट्राइंग टू डिफेंड इट, इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। सो आई एम इन फुल फेवर ऑफ यूसीसी। मैं तो डिमांड करता हूँ, आई थिंक दोस थिंग्स शुड गो अवे। धर्मेंद्र ने देखो मुसलमान बन के हेमा मालिनी से शादी कर ली, अरे जब कहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ को क्रिटिसाइज किया। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु एक्सप्लॉइट। अगर आप जाके डेटा देखें, यू विल फाइंड कि नॉट मेनी मुस्लिम्स एक्चुअली प्रैक्टिस पोलीगमी, बिकॉज दो बीवियां रखने के लिए पैसे चाहिए, गुर्बत है, पीपल आर नॉट वेरी वेल ऑफ। सो आई बिलीव कि यूसीसी, और यूसीसी में दूसरी भी चीज़ें हैं, थोड़े बहुत मैरिज की हद तक तो क्रिश्चियन हिंदू पर्सनल लॉज में जो रिफॉर्म आ चुके हैं। टैक्टिकली ऑल्सो इट्स नॉट ए स्मार्ट थिंग। ये ओवैसी वगैरह जो साहब जो अपोज करते हैं इसको, आई थिंक इफ मुस्लिम्स फुल्ली अग्री देन यू विल गेट रेजिस्टेंस फ्रॉम हिंदूज फॉर यूसीसी में तब्दीली करने के लिए, बिकॉज देयर आर सम कास्ट रिलेटेड इश्यूज इन द हिंदू पर्सनल लॉ। जब लोग कहते हैं ना यूसीसी, दे अज्यूम कि खाली मुस्लिम पर्सनल लॉ है, नहीं, देयर इज अ हिंदू पर्सनल लॉ टू। फॉर अ लॉन्ग टाइम प्राइमोजेनिचर यानी सारी वेल्थ एल्डेस्ट सन को जाना है, दैट वाज अ लॉ व्हिच इज देयर। So so that is point. I think यूसीसी इम्पोज करने से पहले एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस कर लें, एक पब्लिक डायलॉग कर लें, ब्रिंग इन पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज जिनके पर्सनल लॉज हैं, टू टॉक अबाउट इट। दुनिया में कहीं और भी ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है। इनफैक्ट देयर आर मेनी मुस्लिम कंट्रीज जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ इज नॉट रियली एनफोर्स्ड। बहुत कम ऐसे कंट्रीज हैं इन द मुस्लिम वर्ल्ड ऑल्सो जो अपने आप को इस्लामिक कहते हैं, जैसा कि पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है, ईरान, सऊदी अरेबिया, सूडान। बट मोस्ट कंट्रीज आर वेरी सेक्युलर, वेस्टर्न लॉज, अपने कॉलोनियल मास्टर्स के लॉज को उन्होंने इंटरव्यू किया। राम माधव का नाम अतुल पांडे ने कहा, मैंने राम माधव को डायरेक्टली टेक्स्ट किया था कि वो आए मेरे शो पे, मुझसे बात करें। राम माधव ने एक्चुअली मेरे एक दो वीडियोस को रीट्वीट भी किया है, ही लाइक सम ऑफ द वीडियोस दैट आई डिड। तो जब उन्होंने वो किया था, मैंने वहाँ पे उनके, अगर उनके ईमेल एड्रेस या फ़ोन आप में से किसी उनको जानता है तो उनसे कहिए कि डेफिनेटली आए, वी कैन टॉक अबाउट यूसीसी, वी कैन टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ अदर रिलीजियस। ये डायलॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने सो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 9/11 से पहले, 9/11 से पहले यहाँ पर जब हम मुस्लिम्स आए अमेरिका में, तो अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू से कि अमेरिका एक जुडेयो क्रिश्चियन कंट्री है। तो अगर अमेरिका जुडेयो क्रिश्चियन कंट्री है तो फिर हम मुसलमान कहाँ, लाइक हमारे लिए क्या जगह है? सो वी स्टार्टेड हैविंग दिस डायलॉग, और वी इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड द अब्राहमिक ट्रेडिशन, कि मुसलमान भी अब्राहम को मानते हैं, ज्यूज भी मानते हैं, क्रिश्चियंस भी। सो वी हैड अ लॉट ऑफ इंटरफेथ डायलॉग्स इन द 1990s, Christian, Muslims, Jews, and so we started to redefine America as an Abrahamic nation, not as a जुड़े क्रिश्चियन। यहाँ तक कि अगर आप बिल क्लिंटन के स्पीचेस सुने इन
स्टेट ऑफ द यूनियन की जो स्पीच करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसमें वो स्पेसिफिकली कहना शुरू करे चर्चेस, मॉस्क्स एंड सिनेगॉग्स, मॉस्क्स, चर्चेस एंड सिनेगॉग्स। तो मॉस्क्स का लफ्ज आने लगा। कांग्रेस जो शुरू करती है विद रिलीजियस प्रेयर, वो मुस्लिम प्रेयर्स को लाने लगे। देन 9/11 happened, it put us back a lot, बट द कॉन्सेप्ट वॉज चेंज बिकॉज ऑफ दिस डायलॉग। इट्स कमिंग बैक नाउ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गया कि हिंदू पॉपुलेशन भी बढ़ गया है अमेरिका में, और एथीस्ट पॉपुलेशन भी बढ़ गया। तो अगर अमेरिका को आप एब्राहमिक ट्रेडिशन करेंगे तो फिर we are excluding Hindus and we are excluding atheists. So there is no new idea yet जो सबको include करे, besides saying that we should include everybody. So ये diversity and inclusiveness की जो excellence की बात हो रही है कि सबको include करे। एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, एक नया हिंदू मूवमेंट शुरू हुआ है। मैं बोल रहा हूँ उसका नाम बीएसपी या बीपी है। बहुत अच्छे काम करते हैं वो, और एमएसएस भी हैं हमारे कैंपस पे, सब है। इनफैक्ट आई वाज एन एडवाइजर फॉर एमएसए एंड द हिंदू ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट वाज फॉर्म। यहाँ पे गुजरातियों का एक एसोसिएशन है, उसका भी मैं एडवाइजर हूँ। सो in America, it doesn't matter. It's a Hindu organization that celebrates Diwali, or the advisor is Muslim because I wanted to help them. So this is a very important part. So I'm willing to. I think we should have a dialogue, which is very important. See if and dialogue with people who disagree with you. That is the more important point. जो आपकी बात सुनते हैं, अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो हम आए, चाय पिए, से yes and go home, क्योंकि बात क्या करें, because we agree on everything. It is the disagreement which triggers dialogue, और dialogue के through ideas आते हैं बड़े बड़े। इट ऑल्सो हैज़ टू डू विथ इंडिया। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा वॉन्की है। एक साइड बहुत स्ट्रांग है, एक साइड बहुत वीक है, विच इज़ साइंस के साइड पे तो ये बिकम वेरी स्ट्रांग इन इंडिया। मैथमेटिक्स ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। ऋषि सुनक इंग्लैंड में भी मैथमेटिक्स में इज ट्राइंग टू put some क्या बोलना चाहिए, steroids in math education in England. Yes, mathematics is very important. लेकिन critical thinking is also important. Religious knowledge is also important. इंडिया की philosophy का जो tradition है, मतलब ये अमर्त्य सेन की मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ आजकल, जबरदस्त किताब है। The concept of justice, जिस तरह से वो कर रहे हैं, argumentative Indian भी लिखे हुए हैं। So there is a very profound tradition of philosophy. इस्लामिक हेरिटेज में एक बहुत ही मशहूर सूफी थे जिनका नाम था मंसूर अल हल्लाज। उनको क्रूसिफाई कर दिया गया था बिकॉज ही सेड समथिंग दैट द मुल्लास, ही सेड अन्नल हक, आई एम द ट्रुथ, which the mullahs interpreted to say he's saying I am God, and so they killed him for claiming to be God. But what was interesting, जब मैं जाके actual details देखने लगा कि so what they were accusing मंसूर अल हल्लाज was कि वो इंडिया जाते थे और इंडिया से वो हिंदू वैल्यूज अपना कर लेकर आए हैं, और इस वजह से वन ऑफ द रीजंस, बट द एक्चुअल रीजन वाज कि ही वाज कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स एंड द किंग वाज गेटिंग नर्वस कि ही माइट लीड टू अ पॉलिटिकल रिबेलियन वगैरह। बट द पॉइंट इज कि इंडिया में जो सूफी ट्रेडिशन है वहाँ पे काफ़ी सिंक्रेटिसिज्म हुआ है। ये जो खवाली जो मुस्लिम्स ने इन्वेंट किए हैं, द खवाली वाज इन्वेंटेड because India में music was seen as a form of worship by Hindus, and Muslims did not have anything like that. So you can see कि इंडिया का इस्लामी कितना भी कह लें मुस्लिम्स के हम दो नेशन हैं, ये है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप किसी अरब फैमिली की शादी अटेंड करें और कोई इंडियन मुस्लिम या पाकिस्तानी मुस्लिम की शादी अटेंड करें और किसी हिंदू फैमिली की, नॉर्थ इंडियन की अटेंड करें, द सेम रिचुअल्स, सेम रस्मात, except for that little nikah and little mandap, the rest of the rituals are very similar, very tendency. So culturally the log to same hai hi, and it is important for people to recognize ke India's, imagine ये कर लें भाई कि इंडिया के चार पहिए हैं, एक पहिया मुसलमान है, अगर एक पहिया पंक्चर हो गया तो गाड़ी नहीं चलेगी। It's as simple as that. इंडिया इज नॉट स्केर्ड ऑफ चाइना। सर आप प्रवीण साहब बार बार पूछ रहे हैं ना, इंडिया इज नॉट स्केर्ड ऑफ चाइना, बट चाइना इज मोर पावरफुल इन इंडिया में। डोंट मिस्टेक दैट। इंडिया की इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन से चाइना की 17 है, 5 गुना ज़्यादा है। एंड दैट मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। दे आर टेक्नोलॉजिकली भी वो आगे हैं इन सम वेज, डिजिटल में दे आर बिहाइंड, बट दे आर ऑल्सो, मतलब इन सम वेज दे आर ऑल्सो प्रीटी गुड. So don't underestimate China. The US might be overestimating China's capabilities. इसलिए, लेकिन यूएस के पास एलाइज बहुत हैं. इंडिया शुड नॉट अंडर एस्टिमेट चाइना. इट इज़ बेटर दैट यू
prepare for a stronger China than it is. But I would recommend कि इंडिया और चाइना दोनों का फायदा होगा. इंडिया should ramp up trade with China, exchanges, knowledge, cultural exchanges वगैरह. And those border issues need to be obviously handled well. मतलब ये 2 episodes हो चुके हैं 2 साल में. So yes, India needs to resolve that issue, but India needs to trade. India is not afraid of these countries, but China is definitely stronger than India at the moment. और ये गैप रहेगा कई सालों तक, अनलेस पूरी की तरह मुल्क इम्प्लोड. और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ यू थिंक चाइना कैन इम्प्लोड and become nothing from what it is today, India can also do that. And India is not where China is at the moment. चाइना के एसेट्स फिनोमिनल है, कई कंट्रीज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट. अफ्रीका में ही देख लें आप, इंडिया ने 1960 से लेकर अभी तक सिर्फ $70 बिलियन इन्वेस्ट किया है. चाइना हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, लोन्स भी माफ किया है, कैश भी देता है. So China is more powerful, no doubt about it. So India will surpass China in many ways, in some different ways. India की इज्जत ज़्यादा है दुनिया में, no doubt about it. India is less threatening to the world. इंडिया के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विथ इंडिया. मैं अभी एक नेपाली स्कॉलर आए हुए हैं, उनसे बात कर रहा था, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज एज टू हाउ नेगेटिव हिज व्यू ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाज. मैं कोशिश करूंगा कि नेपालीज बांग्लादेशीज को भी बुलाऊं अपने शो पे, सो वी कैन हियर देयर पॉइंट ऑफ व्यू. बट दुनिया डरती नहीं है इंडिया से. दे लाइक इंडिया, दे फाइंड इंडिया हेल्पफुल, यूजफुल. चाइना से अब डरने लगी है some parts of the world. Some parts of the world see China as an opportunity. बीबीसी का भी मैंने वीडियो देखा नहीं है सर. और मैं देख रहा हूँ कि नॉट बैड सर, 500 लोग आए हैं. मैंने सिर्फ मेंबर्स के लिए रखा था. हाउ विल रशिया इंडिया रिलेशंस की बात कर पूछ रहे हैं. पीपल आर आस्किंग अबाउट रशियन इंडिया रिलेशंस. Russian Indian relations, I don't know why there is so much talk. If you go back and look at trade between Russia and India, it's around 21 billion in the last 2 years, and $20 billion are basically India buying Russian oil. So if you went before the war in Ukraine and before India got Russian oil on a discount, I think India-Russia trade is probably $2 or $3 billion, and India-US trade is close to $120 billion. So the economic relations are like no comparison between India and Russia, Russia and the US. So I don't know why people assume that, yes, the Soviet Union helped India in the 1970s. When the Kargil war happened, it was not Russia that was helping India. It was Israel that was helping India during the Kargil war. So people need to separate Russia from what Soviet Union was. Soviet Union was a different country, different ideology, and Russia is a different country with a different ideology. And Russia has put India in a very difficult position with its war in Ukraine. And initially, everybody thought that Russia would win within 2 or 3 weeks. And so all these global structural impacts would not happen, but that is also happening. So India has to realize that I don't think India wants to be friends with Russia. They're just using that as an excuse to not become too tied up to the US. I think that is the thing. That's what I think Dr. Jaishankar is trying to say. He's not saying that we are committed to Russia, we'll support. We are not giving any weapons or any aid to Russia. India keeps saying, oh, Russia was our best friend, Russia was our best friend, and we'll stand by. What is India standing by? Is India selling weapons to Russia in this war? No. Is India sending soldiers to help fight Russia? No. Nothing. We're not giving intelligence or anything at all. We're just taking advantage of Russia by buying their oil cheaply. So we are actually financially exploiting Russia in its moment of crisis. And then we keep saying that we will never abandon Russia. All we did was not vote in the UN against Russia, and whatever trade we are doing from Russia benefits us also. So this talk about, oh, we are great friends and we are greatly supportive of Russia, to me does not stand up to scrutiny. So therefore, I think that the reason why India is doing that is it gives India an excuse not to get too aligned with the West on this issue, because
This is a Western war, no doubt about it. It's a war for retaining Western hegemony in the world. Russia has challenged Western domination, and the West is defending its domination. It's trying to recruit the global South on its side, and India has done a very good job of preventing the global South from being forced to align with Russia. So we are coming close to the end of time. I want to thank all of you who were very generous in their support for Conversations. Uh, to me, the best way in which you can help is to send this video to your young friends, your students. There is one gentleman who said something very interesting to me. He said, I'm not very educated, so I sometimes don't understand what you are saying because I don't have the knowledge to understand what you're saying. But I have made it compulsory, mandatory for all my children to watch Conversations. So to me, that was the best compliment I have got, saying that, okay, he understands the value of conversation. So please share it with your friends, आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, share करें उनसे. Um, I'm not doing this for money. Alhamdulillah, I have a good job, and so I'm trying to reach out, and I'm not just doing about India. I did shows on Brazil, I do other parts of the world, but yes, more than 60% of the content or 70% of the content that I generate is about India and the US. So these are the two places that I focus on, and so you can see the two flags up there. So reluctantly, I will take your leave. Thank you very much for all of you. Oh, somebody said something about Maulana Azad. In fact, Irfan Habib's new book on Maulana Azad is about to come out, and I'm trying to order that. It's not yet available on Amazon. So, yes, we will talk about that book. And I have invited Irfan Habib. He's not the famous Irfan Habib historian. This is a different Irfan Habib professor, and but he's written a book on Maulana Azad. We will talk about that also. And there's a new book come out, Friends with Benefits, the U.S. and England. One of you pointed out. I didn't know about the book, so somebody in the comment section told me, Professor Saab Dekhi, this book is coming out, and yes, I saw it, and I'm going to buy it. It's coming out on the today or tomorrow, actually. There's another book coming out from Princeton University professor, which is very critical of India's economic development. That's coming out in 2 weeks, and I will try to bring that too. So thank you very much, all of you, for joining us. And aap sabko mera salam, namaste, adab, vanakam, namaskaram, greetings, and peace be upon all of you. Thank you very much for coming here. And Khuda Hafiz.